Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Sangeeta Paul and I am a master student as well as preparing for UPSC. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर रेगुलर कर रही हूँ और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ. So today's vlog is going to be productive study vlog where I will show you my complete day study routine, how I manage to cover my syllabus topic wise, subject wise and theme wise, especially now when prelims is coming closer. अगर आप भी यूपीएससी या किसी भी competitive exams की प्रिपरेशन कर रहे हो then this video will be very relatable for you, so do watch till the end. So today my day actually started very early in the morning around 5:30 am. सुबह उठकर सबसे पहले I freshened up, brushed my teeth, got ready and when I looked outside the weather was still a little dark and calm. और उसके बाद we went for running. Honestly speaking this is something I have recently inculcated in my life. मैंने इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ये लिया था कि मैं इस साल भागूंगी, बहुत ज़्यादा रनिंग करूंगी. So initially I started running nearby my place. फिर धीरे धीरे I started going a bit far from my home. So today also I went to nearby place in Gurgaon for running. While running I also do some physical fitness exercise in between, थोड़ा stretching, थोड़ा workout. आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ जो कि बहुत परफेक्ट है. यहाँ पे ऐसे ही मैं उछल कूद कर रही हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है. हम सोचते रहते हैं कि कुछ भी करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए, वो इनिशियली कुछ भी परफेक्ट होता ही नहीं है. यू जस्ट नीड टू स्टार्ट एंड रेस्ट विल हैपन ऑटोमेटिकली. ट्रस्ट मी, बहुत लोग यही सोच के स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं. दैट डे आई कवर्ड ऑलमोस्ट 18 kilometers. Of course not only running, because continuously running is not possible, so I was walking most of the time and whenever I felt like I had energy I started running again, then again walking, and this continued. So overall around 18 kilometers I covered. After coming back home I freshened up and had a healthy breakfast. I had some sweet corn, something light but healthy. When I came back home I can't even explain that feeling. It was such a refreshing and satisfying feeling, but honestly the next day my whole body was in pain. Still I can say one thing, it was completely worth it. And around 9:30 am I started my first study slot of the day. In this session I was covering monthly magazine of economics, but I am not covering the magazine completely from start to end. मैं इसे subject wise cover कर रही हूँ. For example earlier I finished science and tech, then I moved to environment, although वो मेरा complete नहीं हुआ, and now currently I am covering economics section from different magazine. इससे क्या होता है कि revision भी systematic हो जाती है और concepts भी connect हो जाते हैं. This session went for quite long and it was actually a very focused session. जो थोड़ा बीच बीच में चैट जीपीटी से, गूगल से भी मैं हेल्प ले रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती है तो मुझे देखना पड़ता है मीनिंग. आफ्टर स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आई फेल्ट रियली थ्रस्टी, सो आई जस्ट फिल्ड माई वाटर बॉटल एंड अगेन came back to my study table. And around 11 am I started my MCQ practice session. Since I was studying economics, so I decided to practice economy MCQs only. So I was solving questions and analyzing each questions carefully. यहाँ मैं proper mock test नहीं दे रही थी. Instead I was solving questions and making notes simultaneously. Many of these questions were based on NCERT concepts and current affairs, so it helped me connect both. And honestly MCQ practice is very important, because when we only read something we feel like we have understood everything, but when we start सॉल्विंग क्वेश्चन तब पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है. यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे और मैंने जो सही भी किया और जो गलत भी किया उन सबको मैं एक कॉपी के पेज में नोट डाउन कर रही थी. बस उन टॉपिक्स के नाम मैं कर रही थी. एग्जाम्पल टुडे आई वाज रिवाइजिंग टॉपिक्स लाइक रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन टाइप्स, मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स एंड ऑल्सो द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट मैकेनिज्म. उन सबको नोट डाउन कर रही थी, उनका फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रही थी, चैट जीपीटी का हेल्प ले रही थी, जो जैसा पॉसिबल था वैसे किया. बीच बीच में भूख लग रही थी तो मैंने बनाना चिप्स खाया. पता नहीं आजकल थोड़ा वर्कआउट में कर रही हूँ तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, पानी भी पीती हूँ. एंड येस, यूपीएससी ऑफन आस्क क्वेश्चंस वेयर दे मिक्स कॉन्सेप्ट्स विद करंट अफेयर्स, सो अंडरस्टैंडिंग द बेस कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेल, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाई इकोनॉमिस्ट ऑफन प्रेफर रियल जीडीपी इंस्टेड ऑफ नॉमिनल जीडीपी व्हाइल कंपेयरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ? इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. उसके बाद आई हैड माई लंच. सो दैट सेशन वॉज अगेन अ वेरी प्रोडक्टिव एंड लॉन्ग सेशन. लंच करने के बाद बस मैं उठ के बैठी ही थी कि मेरा कुरियर आ चुका था जो कि मैंने ऑर्डर किया था रिसेंटली. सो आई ओपनड इट एंड दीज वर द थिंग्स आई ऑर्डर. तो ये खोलने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था. दीज आर मैगजीन्स फ्रॉम अप्रैल 2025 टू नवंबर 2025. आई ऑर्डर्ड देम बिकॉज दे रियली हेल्प इन कवरिंग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड current affairs from different subjects. Along with that I also ordered PYQ practice books. These
contain UPSC previous year questions from 2015 to 2025 for both GS paper 1 and CSAT. And trust me, solving original question papers really changes your mindset. You start understanding how UPSC frames questions, what kind of traps they put, and how concepts are asked. I ordered these books from गणेश बुक स्टोर. वहाँ पर यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के बुक्स भी अवेलेबल होते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डिलीवर ऑल अक्रॉस इंडिया. सो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो यू कैन चेक द नंबर आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड. आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कुछ भी डाउट हो तो. आफ्टर दैट इट वॉज ऑलरेडी आफ्टरनून, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट नैप. व्हेन आई woke up, I was feeling very hungry, so I had a sandwich and a fruity. And while eating, I was thinking one thing: दिल्ली में तो लग रहा है कि समर ऑलरेडी आ गया है. It was feeling really warm, so I decided to take a bath. Yes, this was actually the second bath of the day. After that, I went outside and played badminton with my mother for some time. Badminton is something which really refreshes my mind. कभी कभी प्रिपरेशन के बीच में प्लेफुल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी होती है because they help us continue the journey without burnout. And honestly, it was a very fun session. बैडमिंटन खेलने के बाद then I came back and started my evening study session, and this time I was studying polity. And while studying, something happened yesterday which I want to share with you all. Yesterday UPSC results were announced, and when I opened YouTube, my whole feed was filled with toppers interviews and success stories. And I won't lie, I was feeling very very overwhelmed because somewhere inside my heart that list is also a dream place for me. Someday, somewhere in that list, I also want to see my name. And I know many aspirants watching this video can completely relate with this feeling. When results come out, we don't feel disconnected. Instead, we feel like we are also part of that journey. We feel excited, motivated, emotional, and sometimes doubtful at the same time. Sometimes we start questioning ourselves, why am I not able to do it yet? Why I am struggling with consistency? वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? And honestly, yesterday I also went through that long overthinking phase. But then again, another thought came: if they can do it, why can't we? Everyone has their own challenges, their own background, their own journey, or success comes at different timelines for different people. So instead of comparing journeys, we should focus on continuing our own path, right? So यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, and since prelims is coming closer, my strategy right now is not to start anything completely new but to revise the things multiple times. अभी last moment में I feel the most important thing is revision and clarity of concepts. So instead of reading big books again and again, I'm mostly revising from notes because notes help you revise the entire subject much faster. For example, in polity, I'm focusing on topics like parliament, then the constitutional bodies, important articles, emergency provision, federal structure, state legislation, and these are the areas where UPSC frequently asks questions. So my strategy right now is simple: first, revision from notes; second, solving MCQs; third, again revise weak area. अगर आप भी prelims के लिए prepare कर रहे हो, then tell me in the comment section, are you focusing more on revision right now or still covering new topics? I would really love to know your strategy as well. After completing this polity session, I shifted to another very interesting area, which is personality news from the current affairs. This is actually very important for prelims because UPSC sometimes asks questions related to historical personalities, scholars, philosophers, scientists, and reformers, especially if they are recently in news. So I started revising some of those personalities. One of them were Sant Kabir Das. Then I read about Charaka. He was the greatest physicians of ancient India. Then I also read about Vikramaditya I, who was a ruler of the Badami Chalukya dynasty. So yes, ये मेरा complete day study session था, and it is often said that success is not about being the best, it is about being better than yesterday. So keep studying, keep believing in yourself, and keep moving forward. Okay, bye. See you in the next vlog.